Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुचो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मते परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मते करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई के रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो सपोज आमे किछि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q सप्लाई कला टू ए सिस्टम व्हिच डज सम एक्सटर्नल वर्क W। ओके नाउ ए जो वर्क टा हला एटा आसिला इन पासिंग फ्रॉम ए स्टेट 1 टू ए स्टेट 2। ओके the amount of heat now becomes equal to the sum of the increase in the internal energy of the system and the external work done by the system. Okay, so symbolically a first law को हमें express करी परिबा as Q equal to U2 minus U1 plus W, where U2 और U1 हेगला तमरो internal energy in state 2 and state 1 respectively. Okay, so for a very small change in the state of the system, this first law can be expressed in a differential form. Delta Q is equal to du plus delta W. एठी delta Q और delta W है actually not perfect differential, but du होची गोटे perfect differential. Okay, because here the internal energy U is a function of the state of the system. ओके सो फर्स्ट लॉटा एक्चुअली दर्शाए जे जेतेबेले तमे गोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दउच dq it is given to a body or system, then a part of this heat will be used in the increase of the internal energy of the body. Suppose this one is du and the remaining part will be used in doing the work against the external pressure. सो याको आमे ये बढ़िया भी लिखि परिबा dq इक्वल टू du प्लस dw। अच्छा ये इक्वेशन लक्ष्य कर ये रिप्रेजेंट करछि गोटे डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो। अच्छा एठी जो वर्क डन होछि इट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, सो इट कैन बी गिवन बाय dw इक्वल टू pdv। ओके सो यार वैल्यू टाको एबे जदि हम पुट करिबा ताहले एबे डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो हे गला केते ना dq इक्वल टू du प्लस pdv। देखो एई केस रे आमे जो देखुछु हीट एनर्जी dq, इंटरनल एनर्जी du और वर्क डन pdv all are in the same units of heat. Thus according to the first law of thermodynamics एठी हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन ए तीनटा जाको को आमे सेम नेचर रो बोली कहि परिबा। ओके अच्छा एबे टिके देखो ऊपर जो आमे इक्वेशन 4.2 और 4.3 पाइथिला हला 4.2 हला जनरल फॉर्म, 4.3 हला डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। सो ए दुईटा जाको इक्वेशन रे थिबा जत्ते सब क्वांटिटी अछि ताको आमे एक्सप्रेस करिबा ओनली इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा एबे टिके साइन कन्वेंशन देखिबा। देखो ये जो अमाउंट ऑफ हीट अच्छी से Q हो कि डेल्टा Q हो, it will be taken to be positive if heat is supplied to the system. Similarly, the heat will be taken as negative if heat is removed from the system. जदि सिस्टम को तमे हीट सप्लाई करछो ताले से हीटा हे जिवो पॉजिटिव आ सिस्टम रो तमे जदि हीट को काढी आनुछो ताले से हीट टा को हमें नेगेटिव बोली की कहिबा। Similarly, in case of work done also, एठी W हो किंबा delta W हो, you can take it to be positive when the external work is done by the system. Okay, so बले एई preposition by को लक्ष्य करिवो, जदि by लागिछि ताहले positive हेबो आउ एटा expansion करिवो
ओके इन केस ऑफ एक्सपांशन तुम्हारा वर्क डन टा पॉजिटिव हेबो सिमिलरली इन केस ऑफ योर कंप्रेशन इन व्हिच द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एबे प्रीपोजिशन लागिला ऑन एई केस रे वर्क डन टा नेगेटिव आसी जिवो ठीक अछि अच्छा जे कोनोसी गोटे जदि आमे थर्मोडायनामिक सिस्टम नउचु इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट इट पोजेस state variable which is known as internal energy eta ame janichu now between any two thermodynamic states jodi duita ebe thermodynamic states achi hela which are in equilibrium tahale the change in internal energy is equal to the difference of the heat which is transferred into the system and the work done by the system which is shown in the figure देखो एटी फिगर रे आमे जदि लक्ष्य करिबा दिस इज द स्टेट 1 दिस इज द स्टेट 2 ओके सपोज स्टेट 1 रे इंटरनल एनर्जी हे गला u1 स्टेट 2 रे इंटरनल एनर्जी हे गला u2 ताले एबे आमे जदि टोटल इंटरनल एनर्जी u को कैलकुलेट करिबा और यू कैन से द चेंज इन इंटरनल एनर्जी u2 minus u1 is given by q minus w where q is the heat transfer from state 1 to state 2 है आउ w है the work done ठीक अच्छे अच्छा एबे टिके फिजिकल सिग्निफिकेंस आमे देखिबा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जदि आमे देखिबा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म ए जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहले आमे जानिछु जे एनर्जी can never be created nor be destroyed secondly energy can only be converted or transferred from one form to another thirdly the total energy for a conservative system will remain conserved so similarly in case of first law of thermodynamics ये मध्य से conservation of energy to ही सूचौची it speaks about the transfer of energy through either work or heat तमाने एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्शन मे बी एटा वर्क रे भी ही पारे हीट रे भी ही पारे ता सहित इट इंक्लूड्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम where all forms of energy are considered which is due to maybe ordered motion or disordered motion of the particles of the system तो suppose ordered motion होची particles रो ताले आमे याकू एसोसिएट करि परिबा वर्क संगे रे केमती बिकॉज आमे जानिछु वर्क इज नथिंग बट द मैक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी सो इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर्ड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सो पार्टिकल रो मोशन सिस्टम रे थिबा जो पार्टिकल्स अछि तार मोशन जदी ऑर्डरली होउची ताले आमे याकू वर्क सहित एसोसिएट करि परिबा अच्छा जदि एबे डिसऑर्डर्ड हे कि तार मोशन टा होची ताले आमे याकू हीट सहित एसोसिएट करि परिबा केमती हीट किंबा थर्मल एनर्जी ऑन द अदर हैंड it measures the energy of disordered motion of the particles which is arising due to the temperature difference देखो temperature difference आसिला माने आमे जानिछु जीरोथ लॉ रे भी पढितिला जे दुईटा सिस्टम अछि सपोज वन सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर देन द अदर ताले एबे हीट फ्लो करिवो सो एज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ओके ए जो हीट फ्लोटा हेबो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी और सिस्टम टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी और सिस्टम सो ए केस रे जो पार्टिकल रो मोशन हेबो दैट विल बी डिसऑर्डर्ड ओके सो डिसऑर्डर मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज एसोसिएटेड विथ द हीट और थर्मल एनर्जी सो आमे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो याको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स गोटे स्टेटमेंट लिखि परिबा जे इन ऑल ट्रांसफॉर्मेशन द एनर्जी ड्यू टू हीट which is supplied to the system it must be balanced by the external work done plus the increase in the internal energy ए जो स्टेटमेंट आसिला this is nothing but dq equal to du plus dw ओके ए जो इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो ए इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एठी स्टेटमेंट रे लिखाई छी ओके सो ए जो फर्स्ट लॉ को आमे कहि परिबा जे इट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द हीट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म सो शक्ति रो खर्च द्वारा ए हीट टा मिलुची okay hence it follows directly from this first law that
This is impossible to make a perpetual motion machine or to derive work without any expenditure of energy. बिना शक्तिर खर्च द्वारा आमे किछि भी कार्य करि परिबा नाही एई कथाटा को एठी ये लिखिछि. Okay, let us now see what are the limitations of the first law of thermodynamics. देखो आमे जेमती जानिला जे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दो it is applicable to every process in nature between the equilibrium states, but it does not specify the condition under which a system can use its heat energy to produce a supply of mechanical work. Okay, को condition रे गोटे सिस्टम तार भितर थिबा जो हीट एनर्जी ताकू प्रोड्यूस करिवो इन ऑर्डर टू सप्लाई मेकानिकल वर्क, से कंडीशन विषय रे ये किछि भी स्पेसिफिक कहि परिबो नाही ए जो फर्स्ट लॉ. सो इट आल्सो डज नॉट से हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सेटा भी फर्स्ट लॉ द्वारा हमें जानि परिबा नाही. सो दीज आर द लिमिटेशन. सो हमें देखिला जे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इंक्लूड्स थ्री आइडियाज. Number one, heat is a form of energy. Number two, energy is conserved in the thermodynamic system. And in the number three, आमे कहूँ जे every thermodynamic system माने which is in thermal equilibrium, it has the internal energy which is actually the function of state only. Okay, आमे जानुथिला जे जेतेबेले वर्क डन को आमे देखुथिला that was a function of path डिपेंडेंट फंक्शन थिला, किंतु इंटरनल एनर्जी टा पाथ डिपेंडेंट नुह, पाथ संगे ये डिपेंड करिवो नाही किंतु स्टेट उपरे डिपेंड करिवो, इनिशियल स्टेट आउ फाइनल स्टेट. सो से जिनसटा को टिके एबे देखिबा इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन. देखो सपोज आमे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कला टू ए वर्किंग सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्मिंग अ सिस्टम, जहाँ द्वारा एबे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हैला in order to take the system from initial state 1 to final state 2. Okay, this is state 1, this is state 2. एबे यहाँ द्वारा internal energy रो जो increase हबो ताकू आमे express करि परिबा by using the first law of thermodynamics. It is given as U2 minus U1 equal to Q minus W. एठी U1 और U2 हेगला initial and final internal energy of the state 1 and 2 respectively. एबे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस ये जो सिस्टम रो स्टेट आमे चेंज करूचु फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2. ओके, सपोज आमे एठी तीनटा पाथ चूज कला, गोटे पाथ हैला अलोंग ए, गोटे पाथ हैला अलोंग बी आ गोटे पाथ हैला अलोंग सी. ओके, तीनटा पाथ नेला. अच्छा, किंतु एक्सपेरिमेंटली गोटे जिनस देखागला जे जो तुम डिफरेन्स अच्छी क्यू माइनस डब्ल्यू यार भैल्यूटा किंतु समान आसूची फॉर ऑल दीज थ्री पाथ्स बिटवीन द स्टेट 1 एंड 2. सो एथिरु आमे गोटे कंक्लूजन बाहर करि परिबा जे गोटे जदि सिस्टम चेंज करूची तार स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट क्यू माइनस डब्ल्यू of that system, it has a definite value, it is found out to be constant and it is independent of the paths between the two states. तेणु आमे कहि परिबा जे internal energy होउची गोटे state function or a point function and it is not a path function, माने ये path उपरे depend करिवो नाही, it is path independent. Okay, unlike the work done. So in other words, the internal energy is a function of any two of the thermodynamic variables P, V, T. यही तीनटा भितर जे कौन से दुईटा रो फंक्शन हो पारे, मे बी P, V रो फंक्शन हो पारे किंबा V, T रो फंक्शन हो पारे किंबा T, P रो फंक्शन हो पारे. डिफरेंशियली जदि आमे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखिबा, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस: du इक्वल टू del u by del P at constant volume into dP plus del u by del V at constant pressure into dV. This is a perfect differential du. Okay, this is found out to be a perfect differential of the thermodynamic variables P and V. And actually the internal energy ये होची गोटे extensive variable. Okay, so एई भलिया internal energy को आमे देखिला जे it is actually not a path function. Okay.
Thank you.